Hey, hello everyone. तो ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी एक इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जहाँ पर आप NTA UGC नेट अपना 11th 12th CA के एग्जामिनेशंस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशंस और बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, ये एग्जैक्टली वो ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है। और अगर आप NTA UGC नेट कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब देर आर वेरियस स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं। सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लेते हैं। आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं विदाउट पेइंग इवन 1 रुपी, एंड आपको नॉलेज मिल सकता है कि हम किस तरह पढ़ाते हैं। और स्पेशल क्लासेस से भी आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, MCQs, PYQs और कुछ डिटेल टॉपिक्स भी। बट अगर आपको ये चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं, और पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस चाहिए विथ नोट्स, MCQs, PYQs सिस्टमाइज्ड तरीके से, देन यू हैव टू जॉइन प्लस, बिकॉज प्लस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्लस की प्राइजेस अगर आपको पता करनी है तो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट वाली प्राइजेस बिफोर डिस्काउंट पे है और सेकंड वाली प्राइजेस आफ्टर डिस्काउंट पे है। अगर आप अदिति लाइव, दैट इज ADITILIVE, सब कुछ कैप्स में लिख के वो कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। और जो भी ये इंटरव्यू है, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया है नेट JRF, और कुछ बच्चों ने तो ऑल इंडिया रैंक भी हासिल किया है। सो आप उनकी स्ट्रैटेजी सुन सकते हैं। लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चा किस तरह प्रिपरेशन करता है ताकि वो JRF नेट कर सके। Yes, ma'am. Okay. Hi Asha, how are you? I'm good, ma'am. Thank you. So that was really nice to hear that you have cleared JRF this time. And today let us discuss something, ताकि जो लोग JRF कर रहे हैं या जो लोग नेट कर रहे हैं, और बीच में अभी एक न्यूज भी आई है कि आपको JRF या नेट करने की जरूरत ही नहीं है और आपको PhD भी करने की जरूरत नहीं है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब बच्चों में थोड़ा ऐसा हुआ है कि भाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अब एग्जाम देना चाहिए कि नहीं, या PhD करना भी चाहिए कि नहीं, व्हाट इज द वर्थ। तो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा आपकी JRF जर्नी कैसी रही, एंड हाउ लाइफ चेंज बिफोर JRF एंड आफ्टर JRF, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन PhD। सो आई थिंक दैट वुड बी द थीम। ओके, तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए तो हमारे व्यूअर्स को पता चले एग्जैक्टली व्हाट आर यू, हु आर यू एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड। Ma'am, first of all, I was born, brought up here only. I did whole my education since KG to PG, we call it, no? Everything from here only. Okay. I did my schooling from CBSE board. After that, I went to Central University, only university in the state, Central University in the state. We can call it a good university. Yes. From here only. Till my PG, last semester, I had no clue that I'll be doing JRF and PG. Here in the environment, it's such a small state, and we call it, people are so simple living that they don't emphasis much on competitive exams. Okay. Competitive exam is very rare here. Yes. लोगों को इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए. Yes, simple time. Okay. So till my PG also I was like that, but I knew I had to do job because I always wanted to be financially independent. So in 2019 June, I completed my PG. Okay. So after that, after giving exams, as I told you, it's a small town here, so we don't have much scope for jobs here. Yes. Very few job sectors are here. So usually, if you want to settle for very minimum, you stay in the town. Otherwise, people or youth, they move outside to the North India or South India. We move outside. So even I wanted to move outside after my PG.
So in July, I got my result, and after that, I started applying in corporate jobs. I was interested in finance, so I started applying in corporate jobs. So it takes time ना मैम कि आप अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ वैसा स्किल्स नहीं मिला था. It's not common here in town. So I was preparing. So then during my PG, my professors and my classmates, when I used to give presentation, वो मुझे बोला करते थे, why don't you try into academics? मैंने तब कभी seriously नहीं लिया कि I want to be in academics. I didn't have that confidence. But my professor, he told me once कि come for PhD, but I had no knowledge and I didn't want to be here in academics. But during that time frame when I was applying for job, 1 month I was idle at home only. I was getting bored कि क्या करना चाहिए. So through my friend, I got a reference कि there is a vacancy in visiting professor, like in lectures, in finance only. So finance has always been my area of interest. So I said okay, क्योंकि I'm sitting here idly, I'm applying with job also, with this I'll apply only. So I came. In the first day of my teaching, I got to know that this is the field I will carry on. Oh, great. I was so motivated with the job. First day only, I was very clear. अब जो कुछ भी होगा आगे इसी फील्ड में होगा. Nice. I never taught anyone before that. Like I used to do presentation, explain it to my friends, but I never taught. First day, first class was with MBA. So the experience I got was very new. So experience I got was very new. So I decided that this is it. This is what I want to do. I stopped applying. I got calls from few companies also, but I didn't respond to them. I focused there only. I improved my teaching skills. Then my colleagues, they told me, if you want to be in this field, first thing is you have to clear NET. After that, you have to do PhD. Yes. So then that year COVID also came in. So I started doing work from home. Yes. So I started doing work from home from 2020 to 2020. That was my second semester I was teaching. So I started work from home. So I got a little bit of time period. So I started preparing. So that time I didn't have a clue about Unacademy. As I told you, here we don't have an environment of competitive exams. None of my friends were giving competitive exams. Particularly this exam. None of my friends. So it was just me alone preparing. I bought book kharidi. It was not of much use, but I started YouTube, looking into YouTube, and then I gave the exam. December attempt in 2020. I couldn't clear. I got around 94 percentile. Cutoff was a bit higher than that. Yes. Though I was not a topper, but ऐसा कभी नहीं हुआ था कि I fail in something. I'm not very competitive in nature, but from my whole education, I have never failed any exam. But actually, नेट में फेल और पास वाला सिस्टम ही नहीं है, बिकॉज कट ऑफ वाला सिस्टम है. अगर हमें पता हो कि भाई 40% या 50% लाना है तो बंदा उसके लिए तो ट्राई करे, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो हाउ मच टू स्कोर, सो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम. हाँ, तो मुझे एक ईगो हॉट हो जाता है कि कैसे मैं कैसे फेल हो गई. दैट आई हैड. यस आई फेल्ट रियली बैड. किसी ने वैसे तो मुझे कुछ बोला नहीं. घर में भी we didn't had pressure because I was earning. I was financially independent. By then I joined another university also. I was working in 2 university as temporary faculty and visiting faculty. So I was financially okay for the city. I was doing okay. Parents की तरफ से भी कुछ नहीं था. But it was me internally. My ego was not what do you call it? Satisfied. Plus I knew that this is the career and I want to be here. अगर ये नहीं clear कर पा रहे तो आगे तो कुछ नहीं. Why you are wasting your time? Right. Yes. Why you are wasting your time? Right. Because my friends, some of them were getting jobs in bank. I could have cleared that exam as well, but why I'm wasting time? So I said, this will be the last attempt. I have to give my 100%. ये नहीं हुआ तो I have to think of plan B. Yes. Because
yeah, commerce students are said to be very practical in mind. Yes. I said, I'm not going to waste my time. Though I like this profession, but I'll keep it as hobby and I want to move forward. I like to be financially independent. I want to grow. Yes. I cannot be visiting professor for my whole life. Correct. So that I decided. Okay. So still I was continuing with YouTube and all. One of my friend in YouTube class only, she YouTube class was of Unacademy. Okay. So online classes thing was not very common in Shillong. Only because of COVID, it got hype. Yes. It was not very common. So in online class only, I don't know that girl personally, but in online class only, I got to interact, and she told me, if you do Unacademy wala YouTube class, why don't you come for special classes? I said I have a time barrier also because I'm working, so I have to give some time there also. Plus, yes. I'm new in teaching, so I have to give so much of effort. For one class, I have to prepare and so many things. I'm not very so she told me ki, don't take class if you don't have time. Come for special classes. Yes. So many teachers are there. So I said okay. Then in May 2021, I downloaded the app. I started following few teachers. You are one of them. For paper 2. Thank you. For income tax, I followed you. Oh. For finance paper, I followed you. There was another teacher, Navdeep ma'am. Oh. I followed her for paper 1. Yes. So I was focusing only on what do you call it? Special classes. Okay. Aapki classes mein aati thi sham ko because that was after my job. Sometimes I used to be late, so I used to come in half of the class, and still I used to come up with so many doubts. Yes. मैम रिमेम्बर एक दिन मैंने आपसे फाइनेंस का कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ा रहे थे. आई थिंक लेवरेज. यस. एंड दो आई एम अ स्पेशल लर्नर, मैं रोज नहीं आती थी क्लास में, रिकॉर्डिंग करती थी, बट यू ऐसे कोई डाउट पूछता है तो इवन आई गेट एंग्री एट द स्टूडेंट, बट यू नो आई सेंड यू माय इमेजेस कि ऐसे है पढ़ाया ना मैंने, you with patience you know solved my doubt. So many classes was because you didn't had any personal interest with me. मेरे जैसे स्टूडेंट कभी आता है कभी नहीं आता है, रेगुलर भी नहीं है प्लस स्टूडेंट भी नहीं, but still you helped me a lot. So I started taking your classes regularly. Oh. Not live I couldn't do. Yes. But for paper 1 also research classes and paper 2 also, especially income tax helped me a lot. Yes. Right now in university I'm confident and I'm taking income tax classes because of your basics. Oh my god, that's great. Yes ma'am. So I took फिर आपके जितने पीछे वाले क्लासेस थे मैं लाइव नहीं कर पाती थी तो I used to do. Yes. I used to do. संडे के दिन 5 या 6 क्लासेस back to back I used to do. Either it has to be my books. Yes ma'am. Either has to be my books or either has to be students वाले books. But books को मैं छोड़ती नहीं थी because that ego वाला thing था कि मुझे exam clear करना ही, I have to give my 100%. Yes. So this happened for whole guy. Unacademy special classes, बहुत सारे teachers, आपने इतना कुछ करा दिया था that materials की कमी ही नहीं थी. It's just I was in special class so I had to arrange. Otherwise materials और classes की कमी ही नहीं थी. For anything you pick, you had so many classes, so many options. Yes. Teachers ने guide भी बहुत किया. During this time only, I think I discussed with you in one class, in life class, that I want to write a research paper. During this time only, I wrote a chapter in a book also. It got published. Great. So, yes ma'am. So just because of your help, कि कोई एक चाहिए होता है जिससे you can talk and your mind will be clear. Clear. I was not clear with the topic, so I discussed with you in the class. Yes. So like that, I did till November 26th. Everything I did. Your classes, जितना पीछे का जितना करा रहे थे finance के, because I like finance so much. I was not good in marketing. Okay. I was not good in management papers. I didn't know the basics also, honestly. That's why I couldn't clear the previous exam. Okay. Because these papers, finance papers, I teach, so I read basics. But for those papers, marketing, those are not my specialization. I couldn't read the question also. I couldn't understand the question also. But because you once shared notes also, remember ma'am in Telegram? Yes. You said कि ये notes है. पूरा पढ़ डाला मैंने. जितना भी था सारा पढ़ डाला मैंने. Classes जितनी भी सारी कर डाली मैंने. Yes. And on exam hall also, I was not confident that I'm going to clear this. So after exams, I started for looking for jobs again. Though I was teaching here, but I thought कि नहीं, अब corporate sector में जाके काम बनेगा.
Okay. But when I got result in Feb this year only recently, Yes. so it was the greatest news for me. I couldn't come to your online classes to share this. Yes. That's why that day before yesterday I came and shared that I cleared. It was such a big help from you, ma'am, from your side, because you are not gaining anything from me, but so many students like me are, they were just from special class learning from you. And there's so much of knowledge you guys are sharing. So thank you so much for that. That is so sweet. So it was a very good and brief introduction, I could say. And many of my questions जो मैं सोच रही थी पूछूं वो अब रह जाएंगे, but that's okay. So first of all, yes, you have cleared your JRF. So one एक important question होता है, ये एक बच्चे को पर्सपेक्टिव में भी डालता है कि exactly इसमें जैसे काफी बच्चे बोलते हैं कि हम JRF हो जाना चाहिए, JRF हो जाना चाहिए, कि it's just like that फेयर एंड लवली या किसी की एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना कि भाई इस चीज के आने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी. सो जेआरएफ के बाद ऐसा होता है कि पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और इज एवरीथिंग सेम? मैम जब रिजल्ट आता है तो उस दिन लगता है कि पूरी लाइफ चेंज हो गई है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग स्टेप. बेबी स्टेप टू टेक इट. So baby step towards your dream of becoming a professor. So that is just the step. Because I was working with the organization, they had clearly told me you have to be JRF or NET qualified, then only you will get a permanent job here. So I gave them the certificate, I got my appointment letter. Just because I was working, otherwise it would have been difficult. Because if you try for the institution, at least you will require 6 to 7 months. Yes. It does not happen overnight. Correct. You have to understand it's just the first step, ma'am. Yes. And it will take time. From here, the journey is more difficult. And it is just a starting, because काफी बच्चों को लगता है कि JRF हो गया तो सब कुछ कंप्लीट हो गया. No, it is just starting, because PhD करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रामायण महाभारत, whatever you call, it is actually that. So yes, first is this. Now, are you applying for PhD at various universities near you? Yes, ma'am. And do you think? But one thing, But one thing, I have not restricted myself toward geographical location. I want a university which will help me in my career path. So I'm looking for universities which are good universities, good NIRF ranking universities. As I told you, I am in a Northeast India. So here, universities are limited. Quite few number of, yes ma'am. Yes. Few number of universities are there. So I'm not restricting myself to geographical location. I'm aiming for good university. That is my aim. So one of the thing is, if you have applied, like suppose if you're going to apply, so do you know the entire procedure? So far, I have only applied in 2 universities. So basically, what they ask from you is, they ask you a statement of purpose, in which you will write the purpose, in which why you want to do PhD. Yes. Why you want to do PhD in particular university only, and why particular topic. Okay. So you have to be ready with that. Yes. Plus, they want to know something about your area of interest. These are the two things. Okay. And one more thing, about your opinion, because recently एक news आया था कि जो PhD नहीं है, जो experts हैं field में, उनको भी professor बनने का मौका दिया जाएगा. So उसके बाद there is a good, you can say, topic right now for discussion among students कि PhD करना worth भी रहेगा कि नहीं. So what are your opinions on that? Ma'am, when we read the notification which came out, उसमें clearly mentioned है कि those who are an expert in that area and are not PhD holders, they will also get position in the university to teach, and extra positions will be created for them. Correct. कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जो पहले से पोजीशन है उनमें उनको फिल किया जाएगा, नहीं, एक्स्ट्रा पोजीशन उन एक्सपर्ट्स के लिए दिया जाएगा. सो हमें समझना होगा कि 2 चैनल्स अब होंगे जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं. By the normal traditional route, do your PhD, get into it, and now through new channel, expert can get into it. So हमें ये समझना होगा PhD की importance कम नहीं हुई है. It's just new positions are being created. Yes. So PhD till date holds the same position. And if you want to get into through academics, you have to go by this route only. एक ही रास्ता है. और वैसे भी अगर एक्सपर्ट्स भी रखा है तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट
7 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. इट्स नॉट दैट कि भाई जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो विल बिकम एन एक्सपर्ट. यू नीड एन एक्सपीरियंस. सो बच्चों को ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक्सपीरियंस बोला है तो लिटरल एक्सपीरियंस है. यू हैव टू गेट दैट एक्सपीरियंस. ओके. Apart from this, I think you have answered that, but this would be my personal question to you. Like, how many of you people how many people would you recommend for Unacademy? कि आप Unacademy पे जाओ और lectures देखो, might be plus or might be special, to crack a particular exam, any exam, especially NET. Ma'am, Unacademy I have been using only for NET exams, so I can only tell about NET exams. Yes. So you for income tax, for finance paper, for marketing paper, for research paper, blindly students can come and attend your classes. Does not matter plus or special. Itni knowledge hai ki you will get so much in all the platform, in YouTube as well. Then I have referred Ma'am Navdeep for paper 1. Okay. Though she is a commerce teacher, but उनका paper 1 का classes ज़्यादा होता है. Grip अच्छा होगा paper 1 में. Yes. जी. So that I have done. I have taken again because I teach income tax, so I needed very detailed knowledge of income tax. So again, Raghav sir helped me. Raghav sir तो इतना detail में करवाते हैं, मैंने देखा. And the biggest thing I like about especially Raghav sir is वो जब लिखते हैं उनकी handwriting इतनी छोटी छोटी आती है. And they write it very precisely. मतलब मुझसे ज़्यादा सुंदर उनकी handwriting. Ma'am, your voice is not audible. Now is it audible? Now आ रही है भी आवाज? नहीं आ रही है मैम वॉइस. एक मिनट. अभी ट्राई करो. अभी. Yes मैम. अभी आ रही है. Okay, so राघव सर के बारे में एक चीज थी कि वो डिटेल में करवाते हो तो ठीक है. He has more better handwriting than mine, especially on that tablet. मैं एक बार देखा तो इतना छोटा छोटा लिखते हैं. He writes it very precisely and I was so jealous कि मैं क्यों नहीं लिख पाती है. वरना जब मैं स्क्रीन पे लिखती हूँ, it is like इतना कचरा होता है इसका. मुझे बहुत गुस्सा आता है. But yes, I do say राघव सर बहुत अच्छा करवाते हैं income tax. When I take a screenshot, I used to take up the screenshot allowed नहीं है. Allowed नहीं है, right? And I used to keep it. From there, I used to make notes for my students. तो इतना उन्होंने help किया है. Right. He has like. So yes, sir. ये कुछ teachers हैं जिनकी बदौलत I got all India rank 47, ma'am. Raghav sir was the one who told me कि Asha, you got all India rank 47. He might have calculated that. कैसे calculate करते हैं? He might have calculated that. I just gave him the result because fortunately I got his number, WhatsApp number. Okay. I couldn't attend online classes, so I sent him my mark sheet. He said, "This is the mark sheet I got." And he might have calculated and told you. No, I downloaded the mark sheet and directly I sent it. He was the first person I sent my mark sheet to. तो उन्होंने 2-3 मिनट बाद मैसेज किया और you got all India rank 47. हाँ, उन्होंने कैलकुलेट करके बोला होगा. जी, मुझे नहीं आइडिया नहीं था कि रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं. रैंक की लिस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है. रैंक की लिस्ट नहीं निकलती, उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, इसीलिए. Okay, so last question from my side is, what do you think, like, अगर एक बच्चे को प्रिपरेशन करनी है, आपके जैसा कोई भी बच्चा है एवरेज जो एक स्मॉल टाउन को बिलोंग करता है, जिसके कंसेप्ट शायद बहुत ज्यादा क्लियर ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है. ये तो मैं मानती हूँ. आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके नहीं चल सकते. दिस इज व्हाट आई फर्मली बिलीव इन. बट ऐसी कुछ चीजें जो हर एक बच्चे को ध्यान में तो रखनी चाहिए while preparing his own strategy or preparing for this particular exam. Ma'am, I feel अभी के टाइम पे you have so much of knowledge and so many teachers. First thing you do is एक बनाइए एक बाउंड्री कि आप इन्हीं सबको रेफर करेंगे till your exam. इन्हीं सारे टीचर्स को फॉलो करेंगे. टीचर्स you can select as per your liking, how you understand them. For commerce also you know ना मैम Unacademy पे कितने सारे टीचर्स. बहुत एजुकेटेड है. In the beginning I was very confused. But सबकी मैंने क्लासेस अटेंड की. I picked
whom I like, जिनकी explanation मुझे समझ आती थी, जो मुझे लगता था कि मेरे जैसे बातें करते हैं, and I could connect. मैंने ऐसे 3-4 टीचर सेलेक्ट किए डिफरेंट एरियाज के लिए, पेपर 1 पेपर 2. उसके बाद मैंने उन्हें नहीं छोड़ा टिल एग्जाम. डाउट्स हो, उनके टेलीग्राम चैनल हो, हर जगह उनको फॉलो कर लिया. मतलब कहते ना चिपक गई. डिसाइडेड उन्होंने जो बोला विदाउट थिंकिंग कि ये सच में हो सकता है या नहीं, बिकॉज आई न्यू कि ये क्लियर कर चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर. उन्होंने जो बोला आई डिड. उन्होंने बोला नोट्स बना लो इफ यू आर फ्रॉम स्पेशल. नोट्स इतने बनाए मैंने मैम, बहुत सारे नोट्स बना लिए, जो हेल्प किया मुझे. आप ही कहते हैं ना कि प्रिसाइज नोट्स बना लो, पूरा किताब मत लिखो, एक छोटे से नोट्स बना लो. पूरा बना लिया मैंने. क्लास करती रहती थी, बनाती रहती थी, बिकॉज पीडीएफ से पढ़ना मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक इट. आई आल्सो डोंट लाइक वो की. यस सर. वंस इन अ वीक जितने स्पेशल क्लासेस के लिए मॉक टेस्ट आते थे, सारे दिए, कभी नहीं छोड़ा मैंने. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, आफ्टर मॉक आई यूज्ड टू, मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे कभी, बट आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड एनालाइज इट. कहाँ गलती है, कितने रॉन्ग है, दैट कॉन्सेप्ट आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. Either I used to search YouTube or Unacademy पे क्या ये concept के classes लिए गए हैं. Then I used to mark it and I used to clear my basics. कि next time ये गलत ना हो. So mock very helpful. Revision, continuous revision. इस वीक खत्म किया, आपने भी बहुत बार क्लासेस में बोले होंगे कि रिवीजन करते हैं. अभी तक बोलती हूँ. इतना लेंथी सिलेबस है. These are the two things I think I'll tell till the end of my career or what. कि भाई क्वेश्चन आप खोल के पढ़ो, बिकॉज आधे लोग नोट नहीं पढ़ते और क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और रिवीजन रेगुलरली करो. दीज आर द टू थिंग्स. माय गॉड, फ्रॉम लास्ट 3-4 years में कंटिन्यूअसली ये दो डायलॉग तो मारती हूँ क्लास में. आई डोंट नो, बट यस दिस इज इम्पोर्टेंट. फिर ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम आप व्हाट यू कॉल इट, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न देके आप करके निकल जाओगे. हर बार नए क्वेश्चन आते हैं. तो इस एग्जाम को क्रैक करने का आप लोग से ही मैंने सीखा है कि आप कहते थे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. तो जितना डीप में जाके आप एक चीज को समझ पाओगे, और ये पता चलता है कि आप कितना किसको समझा पा रहे हो. मेरे पास एक प्रिविलेज था कि आई वाज अ टीचर, सेम कॉन्सेप्ट आई यूज्ड टू एक्सप्लेन इट टू माय स्टूडेंट्स. तो मैं फिर उनका रिएक्शन देखती थी, क्या वो समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रही हूँ. यस. तो अगर मुझे लगता था कि आई एम सेटिस्फाइड विद द क्लास आफ्टर टेकिंग द क्लास, माय स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, तो मुझे लगता था मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है. सो यू गो डिटेल इनटू द कॉन्सेप्ट. कभी ना कभी आपको इस प्रोफेशन में काम आएगा ही. ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ के और ये एग्जाम पास कर सकते. सब कुछ इंपॉर्टेंट है. यस. सो यू डू दिस एंड रिवीजन, रेगुलर रिवीजन. दैट इज द थिंग मैम. दैट इज वाज द स्ट्रेटजी. यस. So that's great. I think this will be helpful to all the students, and thank you so much for taking out time actually in your entire schedule and giving us the time to make helpful. My privilege. That is so sweet. Okay, so that's it. I think so all the best for your future. PhD के लिए all the best. Thank you. And make sure आप जो भी achieve करना चाहें आपको मिले. Don't worry about anything. And if anything I would be helpful of, please do let me know. Thank you so much, ma'am. Thank you.